all the distinguished guests on the dais, to all the senior government of UP officials in the audience, members of the audience, and to the organizing team of ET. I know this is slightly later in the evening, but the topic remains very pertinent, and thank you for your presence and for your attention. I am very humbled to be the moderator for this session, given the importance of the agenda. And I am also very humbled and privileged to be representing Deloitte, which is partnering with the government of UP on the agenda of creating a $1 trillion economy. So without further ado, we do have a distinguished set of members on the dais, so I will not speak a lot, but allow them space to speak. So one of the things that, of course, we all understand that UP is trying to do is to set up a $1 trillion economy. And as we laid out this vision to create a $1 trillion economy, the Honorable Chief Minister has also laid out the vision of what is called as inclusive growth, which means that every member of the population of UP should be able to participate in the growth of UP. And in that context, the agenda of education, the agenda of skilling becomes a central point for the development of the state. Also parallelly, the government of India has come up with NEP, and we have the honor of Shri D.P. Singh ji being amidst us as an architect of NEP 2020. So I would like to begin this discussion by inviting Sir to share his views on NEP and what are some of the implications of NEP for a state like Uttar Pradesh. Sir. Distinguished panelists and Honorable Minister Sahab and all the distinguished delegates, I am very happy to be here this evening participating in this session related to education and skill. And I am also very happy to have the principal secretaries of the departments, special secretaries of medical education, Director General of Basic and Secondary Education, and also a panelist from the industry side. Swati Agrawal, who is representing Deloitte, you are aware of her contributions. Friends, as far as NEP 2020 is concerned, it is the national education policy which came after 34 years of the previous national policy on education, 1986. It is also the first education policy of 21st century. It is India-centric, it is learner-centric, it focuses on multidisciplinary and holistic education. It focuses on Indian knowledge systems, Indian languages, Indian arts, Indian culture. It focuses on socially relevant, nationally important, and globally significant researches. It talks about the capacity building of the teachers at all stages. Teachers teaching in schools, faculty teaching in colleges and universities, and also relevant quality researches which can contribute in solving the various problems nationally and globally. The very vision of this national education policy is to develop global citizens, still remain connected to Indian roots. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं इस बात को कि अपनी जड़ों से जुड़े रह करके हमें वैश्विक नागरिकों का निर्माण करना है, और एक ये बहुत बड़ा विजन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और पूरी की पूरी दृष्टि को हमारे को नज़रिए को एक तरह से परिवर्तित करता है। और वो इसलिए है कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमें अपने देश को ज्ञान की महाशक्ति बनाना है, नॉलेज सुपर पावर बनाना है, और एक लीड नेशन के रूप में, एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे जाकर के उभरना है। हमारी ये अभिलाषा है कि उत्तर प्रदेश में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के कि उत्तर प्रदेश नए भारत के निर्माण में और पूरे विश्व को नेतृत्व देने वाले देश के नए भारत के निर्माण में एक अगुवाई करे, सबसे आगे आकर के, और उसमें एजुकेशन और स्किलिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। मैं शुरुआत में इतना ही कहना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आगे के हमारे साथी लोग अपनी बात कहें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा ग्लोबल सिटीज़न बनाने की बात है, तो मैं शुरू करना चाहूँगी बेसिक एजुकेशन से, विजय किरण जी से। सर, आज की डेट में लगभग 5 करोड़ बच्चे हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूपी में पढ़ रहे हैं, और एनईपी के तहत और जो यूपी 1 ट्रिलियन की विजन है उसके तहत, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग द सेकंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट विद्या समीक्षा केंद्र आफ्टर गुजरात. Congratulations on that initiative. And now, keeping in mind the agenda of NEP and the agenda of UP 1 trillion, could you walk us through some of the other initiatives that we are taking in basic and in secondary education, with a particular focus on how we are, establishing continuation of education and how we are linking it to skilling? Yeah, thank you, Swati. Actually, Vidya Samisha Kendra is one of the gamut of intervention that was initiated as a flagship program, as a comprehensive integrated flagship program to make the entire system outcome based. Because the problem was that we had focused a lot on access, on inputs and so on, and that was not making a dent on the outcomes and on the education indicators, which was critical because we are a state with, as you said, close to 5 crore children in our education system. We have that data on that, and even startling fact is we have 45 lakh people coming into class 1 in this year. That's an astonishing figure. So there is a responsibility towards that. So the entire gamut of interventions is initiated. So we are happy that we have been getting good results on that. We have had the largest convergence program for infrastructure upgradation in the country, called Operation Kayakalp. There has been a multiple jump in the indicators in terms of access, infrastructure and so on. We've had the largest governance reforms in terms of the DBT program, with the largest education transfer to the students of 1.9 crore students, be getting all the UP is one state which is giving everything, all utilities in terms of uniform, sweaters, bags and everything through the DBT route, through Aadhaar authentication process. So that has led to a lot of time saving and cost savings. We've also had one of the most efficient out of school mainstreaming programs and the Divyang programs. We have had a lot of challenge in terms of mainstreaming the gender inequity part and so on. But the critical part is the learning outcomes, wherein the Vidya Samisha Kendra and entire classroom transformations will come in. So as DP Singh sir said, we need to focus on teacher training, we need to make it structured pedagogy. Classroom transactions have to increase. It has to be, the classrooms have to get transformed so that they are ready for the upcoming jobs. We have had now the series, now we have started 5,000 model schools building in the next 4 years, which will give access to Navodaya type or Kendra Vidyalaya type education for almost 25 to 30 lakh students. That's going to be a major game changer. We are going to convert them into skill hubs also. The schools will be converted into skill hubs also. That's a challenge that we need to face up and make sure that these people are job ready with the necessary skills for the future of work that is coming up. And also we are also making it entirely data driven. So that is why we have built in technology, because wonderful exciting things are happening in technology sphere, tech sphere. We are seeing that, we saw what happened in Diksha. The UP is one of the early adopters and one of the largest adopters of Diksha platform in the country. We are completely making the entire system student registry based. We call it universal learner. That is the first state to do that in the national digital education architecture. So a lot of exciting things to happen. We have a responsibility to be the front runner in these initiatives, particularly in the technology platform, so that we make a leapfrog there. And critical thing that we are going to work on now is the skill development part, the model schools part, and also the learning outcomes, because early grade literacy and numeracy are critical for the $1 trillion economy, for the skilled manpower to come to the market, and then they are ready for skilling and for future jobs. Thank you so much, Vijay, and thank you for touching on this ever important aspect of skilling. From here, let me move to higher education, Bobde. Sir, we are seeing that as part of NEP, the GER for higher education needs to go up from the current 23-25% to actually 50%. And what that would imply for us is that we will have almost 1 crore more
children who will come into the higher education sphere. In this context, how are you looking at creating an enabling ecosystem for inviting private universities, foreign universities into UP and providing world-class education for the youth of UP? Thank you, Swati. First of all, let me thank ET for organizing this conclave and inviting me here. My speech will be, sort of, I'll structure it in three parts. First, I will give in a larger macro level what exactly is happening. At macro level, if you see $1 trillion economy, what you require for GDP and growth rate is labor, capital, and technology. And what is UP's advantage? UP's advantage is we have human resource surplus. I don't call it a labor surplus, I call it as a human resource surplus. And vision for us to make this advantage or to convert this advantage into competitive advantage, that we should develop technologically skilled human capital creation. I think these 5 words, we have to focus on this, technologically skilled human capital creation. Now, at this macro level, how higher education can go in? Now, in higher education, as you rightly said, we are on to supply side, and what you said is the demand side. So, in the market of higher education, in supply side, let's see the facts. In our sector, we have state universities plus deemed universities, 21. Private universities, 30. Government colleges, 131. Aided colleges, 331. And self-financed colleges, around 7,300. So total around 7,900. So that is, that is the side. And how much we are catering? We are catering 48 lakh students. What you are saying now is 1 crore plus additional. So it is bound, and you can see from these facts that 7,300 is self-financed private colleges. That means majority, 80%, 90% is run by private sector. Now creating, technologically skilled human capital, we have to depend on private sector. Now what policy steps government has taken, and as you know, the government of UP has promulgated UP Private Universities Act 2019. We have also promulgated UP Private Universities Nimavali Rules 2021. We have made it effective from 6 July 2022. And you must have, you have seen in last 5 months, the government of UP has already approved LOIs, issued LOIs to at least 9 universities, and another 10 to 15 universities are in pipeline. So there is definitely demand, and the supply side is catering up. Government as enabler and market maker, we have put in right policy initiatives we have taken. We are implementing the policy. Now this is as far as quantity is concerned, but now we have to ensure the quality also. So for quality, you have the ecosystem of NAC, you have the ecosystem of NIRF, you have also NEP, because as sir rightly said, even if our human capital creation is technology skilled, we have to make it, holistically developed, as well as with Indian knowledge system. So that is our target. So while implementing this policy, what we have to ensure that simultaneously we are able to satisfy NAC, NIRF, and NEP 2020, as well as SDG 4 goals, where you said that there is, gross enrollment ratio and gender parity index. So both these we have to achieve simultaneously. So NAC, NIRF, SDG, NEP 2020. While satisfying these criteria, we have to give the private universities and foreign universities. Now, as a regulator of this sector, UGC has implemented just now twinning initiative. And Times of India on 1st June 2022, they have published in the Times of India, at least 48 institutes are ready for coming here. And you are aware of that because Deloitte is doing that. So what we are proposing now, in next few weeks you will see that as you must be aware that now government of UP has taken out higher education institutions, the policy from outside the industrial sector policy. So our first target right now
is to design and develop higher educational institutes policy which attracts private sector financing. And right now we are under the stakeholders consultation process, and within next 6 to 8 weeks, you will see that we will have totally independent sectoral policy for private investment in higher education institutions. That is one step. The second step that we will have, that we will invite various private players from in UP and outside UP as well as global level to have their consultations with us, what exactly they are expecting from the government. And while we give they give their expectations, we also give our expectations both for quality and both for NEP 2020, how to have holistic, how to have flexible learning, how to have your Indian knowledge system. So we'll have this kind of consultations and negotiations, and we'll come up with the policy within next 6 to 8. That process is already started. But the final aim of higher education department is to create technology skilled human resource, human capital creation. But we have to see how we can create UP human capital for UP human capital for the rest of the India, and UP capital, human capital for the rest of the world. So in these 3 areas, we will have our policy initiatives within next 6 to 8 weeks. Thank you so much. Sir, thank you so much, and thank you for giving this frame of UP for UP, UP for India, and UP for the globe. Moving on, I would like to come on to Suresh Chand Saab. Sir, as we know, UP has the largest population. It's one of the largest population states in the country with 23 crore people. And when it comes to skilling, and we look at the age group of 15 to 34 years, 7 crore people are in this age group, which is amenable to skilling. We also know that as part of the initiative of UP 1 trillion and rapid industrialization, 2.4 crore new jobs will be created. And as Bobde ji just mentioned, UP for UP, so 2.4 crore jobs are coming up in UP, wherein we will skill the UP to, take these 2.4 crore jobs, and then beyond that, take jobs up in India and in the world. Sir, in the context of this, could you please share with us some of the initiatives from a skilling perspective? And if you could also throw some light on how skilling is then leading to employment. Thank you. Thank you, Swati. First of all, my name is Subhash Sharma, not Sorry, Suresh. sir. See, I'm looking after technical education, vocational education, and skill development, all the 3 departments. First of all, I can say that without going for infrastructural reforms, upgradation of our old institutions, and bringing technological changes to ourselves, it's not possible for us to achieve this Herculean task by 27. To me, sometimes I do feel that my department is the chabi of all locks. Everywhere, without technology or technological changes, हम वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकते जिसके लिए हम लोग आज सुबह से बातें कर रहे होंगे, और बहुत दिनों से हम लोग इस तरह के कॉन्क्लेंस कर रहे हैं. मेरे पास जो मेरा इंफ्रा है वो बहुत कुछ है. अभी जो पॉलिसी में बना हुआ है कि आपको ब्लॉक लेवल तक पहुंचना है, हम लोगों के पास पूरे उत्तर प्रदेश में देयर आर 800+ डेवलपमेंट ब्लॉक्स. यदि आप इसको डिवाइड करेंगे, देयर आर 3300 ITIs. तो एक ब्लॉक में एक से हम लोग कहीं ज़्यादा हैं. 3-4 टाइम्स हमारे पास में ITIs हैं. पॉलीटेक्निक कॉलेजेस अगेन दे आर 1400 इन नंबर्स, government and private both. Engineering colleges again, including pharmacy institutions, they are around 800, 763 exactly. इतना स्ट्रक्चर हमारे पास में होते हुए भी अब हम उसकी क्वालिटी को इंश्योर ना कर पाएँ, तो ये आई थिंक
इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि आपको उस तरफ ध्यान देना है। एनईपी के बारे में सिंह साहब बता रहे थे, उसकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि हमारी स्कूल एजुकेशन के साथ में ही हमें वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर देनी चाहिए। उसके बिना आप काम चलने वाला है नहीं। वहीं से ही आप स्टूडेंट के माइंड में किसी न किसी एंटरप्रेन्योरियल स्किल को इनकलकेट करेंगे। गवर्नमेंट ने ये इसको स्टार्ट कर दिया है। जो हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज रन करते हैं थ्रू स्किल डेवलपमेंट मिशन, दैट अप्रोच हैज़ बीन वेरी वेल टेकन अप और स्टार्ट किया है हमने। सभी स्कूल में तो नहीं, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिस सेशन से 150 स्कूल्स में इसको स्टार्ट कर दिया गया है। और इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो 9th to 12th स्टैंडर्ड के हैं। वॉलंटरीली वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बट एक स्टार्ट हो चुका है। दूसरी बात, हमारे जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, आप किसी भी ITI में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे, जो वर्कशॉप होगी उसमें लेथ मशीन है और डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स आर देयर। बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है। अब आप उसको रिप्लेस करना, चेंज करना, न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के आना है। बहुत से ट्रेड्स तो ऐसे जो ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, और अब आपको नए ज़माने के ट्रेड्स को लेकर के आना है, जिसको हम लोग न्यू एज कोर्सेज कहते हैं। लाइक ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये चाबी कहाँ काम में आती है? ये खेत में भी काम में आ रही है। किसान के पेस्टिसाइड्स का आपको अगर स्प्रे करना है तो ड्रोन से आप कर सकते हैं। आपको दवाएं भेजनी है, आपको अर्थक्वेक हो रहा है या कोई और डिजास्टर है, तो वहाँ पर आप दवाएं ड्रोन के माध्यम से भेज सकते हैं। बहुत सारे उसके उपयोग हैं। 3D प्रिंटिंग इज़ देयर। नई टेक्नोलॉजी लेकर के लोग आए हो। मैकाट्रॉनिक्स की दुनिया है, मशीन लर्निंग जैसा सब्जेक्ट है। तो इस तरह के जो न्यू एज कोर्सेज हैं उनको हम लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी और ITI में भी हमने शुरू कर दिया है। बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो मार्केट में उनको कोई जॉब मिल जाए। एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ अगर हम लोगों ने शुरू से ही ध्यान नहीं दिया तो आगे इतना बड़ा वर्कफोर्स सरप्लस हम लोग मानते हैं। कोई सूरत जाता है, बॉम्बे जाता है, पंजाब में चला जाता है, सीजनल लेबर के रूप में लोग काम करते हैं। उनको अगर आपको यूज़ करना है, बेस्ट यूज़ करना है, तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेज सभी जगहों पर आपको लेकर के आने होंगे। एक जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हम लोगों ने टाटा के साथ में एक बड़ा MOU करने का हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अराउंड 5,000 रुपीज़ का करोड़ रुपीज़ का MOU हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें अराउंड 150 ITIs को उसकी ओवरहाउलिंग होनी है। उसके उनके अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, उनको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल का मशीन और इक्विपमेंट लेबोरेटरी वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। TOT प्रोग्राम ये बहुत ही ज़रूरी है, सभी के लिए है। पुरानी टेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ाएं, अब आपको नए ज़माने के साथ में अपने आप को अपडेट करना है। तो स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, इस तरफ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, मैं अपने आप को यहीं रोकना चाहूँगा कि अगर आप सभी सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तभी आप ये 5 गुना इन 3-4 सालों में इकोनॉमी को बढ़ा सकते हो। विदाउट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उसके हेल्प के ये चैलेंज पूरा होने वाला नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। थैंक यू। Subhash ji, thank you so much for your views on skilling. Moving on to medical education, Durga ji, we all know that the country lacks qualified doctors और एक बहुत भारी numbers में हमें इंडिया में डॉक्टर्स बनाने की ज़रूरत है। यूपी में मेडिकल एजुकेशन के कॉलेजेस हैं and I would really like to know what are your views on how we can enhance the capacity of medical education such that it attracts youth from all over the globe. थैंक यू वेरी मच स्वाति जी। ऑनरेबल मिनिस्टर, डायस पे सभी डिग्नेटरीज और ऑडियंस में सभी सीनियर ऑफिसर्स, सबको मेरा नमस्कार। और मैं इकोनॉमिक टाइम्स को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने बेस्ट ऑफ ब्रेन्स को यहाँ इनवाइट किया है और ऐसे इश्यूज़ पे डेलिब्रेट करने के लिए उनको बुलाया है जो हमारा फ्यूचर शेप करेंगे। एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश की आज के डेट में जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि हमारी हाईएस्ट परसेंटेज है यूथ की पॉपुलेशन पूरे देश में। तो एक तरफ जहाँ डिक्लाइनिंग एज हो रहा है कंट्रीज़ लाइक जापान और हमारे भी कुछ प्रदेशों में, तो
तो हमारी यूथ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्किल्ड वर्कफोर्स में। और आपने डॉक्टर्स की बात की, मेडिकल एजुकेशन में हम 3 लोगों की बात करते हैं, डॉक्टर्स के साथ साथ हम नर्सेज और पैरामेडिकल की भी बात करते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर के पीछे 3 नर्स और 3 पैरामेडिकल का साथ होता है, तब जाके मरीज़ का इलाज हो पाता है। सो एट मेडिकल एजुकेशन वी आर वर्किंग ऑन अ 3-pronged अप्रोच, एंड पर्टिकुलरली इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव वन ऑफ द एडवर्स रेशियोज़ ऑफ पेशेंट टू मेडिकल केयर प्रोफेशनल्स रेशियो, हमारा जो परसेंटेज है वो बहुत पुअर है। तो हमारी बहुत कैपेसिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को चर्न आउट करें, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, बट हम सप्लाई कर सकते हैं बाकी स्टेट्स में जहाँ पर इतनी स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, इतना पोटेंशियल नहीं है। हम बाकी कंट्रीज़ को भी सप्लाई कर सकते हैं। देयर आर ओपनिंग्स कमिंग आउट इन यूरोप, इन UAE, इन द गल्फ कंट्रीज़, इन जापान। कहाँ कहाँ हमारे लोग यहाँ से पढ़ लिख के नहीं जा सकते, बिकॉज वी हैव द टैलेंट हियर, इट जस्ट नीड्स टू बी नर्चर्ड। तो सीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट 2 एजेंडाज़ पे काम कर रही है। एक तो जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम चालू की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और उससे जुड़ी एक और अच्छी बात यह है कि हर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक को-लोकेटेड नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। तो जहाँ डॉक्टर्स नए नए निकल के बाहर आएंगे सिस्टम में, उनको सपोर्ट करने के लिए ये दोनों कैटेगरी के लोग भी निकल के आएंगे। तो एक तरफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज़ किया जा रहा है बहुत स्पीड से, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बन रहे हैं, सीटों में वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्राइवेट प्लेयर को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के तहत अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई है टू इंसेंटिवाइज द प्राइवेट प्लेयर इन सेटिंग अप मेडिकल कॉलेजेस, एंड वो स्कीम ऐसी है कि हमने 16 हमारे ज़िले हैं 75 में जहाँ पे एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ना सरकारी ना प्राइवेट। तो ये पर्टिकुलरली उन 16 अनसर्व डिस्ट्रिक्ट्स के लिए पॉलिसी आई है। आपको जान के खुशी होगी, हैरानी होगी कि ये सारे अनसर्व डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि भदोही, बलिया, महाराजगंज, संभल, जिसके नाम शायद आम आदमी ने सुने भी नहीं होंगे जो इस तरफ को रहते हैं, लखनऊ के वेस्टर्न साइड पे। इन 16 डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारे पास प्राइवेट पार्टिसिपेशन इस कदर का आया है दैट वी हैव डबल, हर जगह के लिए हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं कि वी वांट टू सेट अप मेडिकल कॉलेज। और पार्टली उसका कंट्रीब्यूशन मैं अपनी पॉलिसी को दूंगी कि उसमें इस तरह हमने उसको बनाया है कि हम उनको बैक एंड सब्सिडी दे रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि आप जिसको पेशेंट केयर प्रोवाइड करेंगे उससे आप चार्ज भी कर सकते हैं अप टू 1.5 टाइम्स द रेट ऑफ CGHS, बशर्ते कि जो गरीब आदमी है उसको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत बेनिफिट मिलेगा। तो हमने एक हार्मनी सरकार ने क्रिएट करने की कोशिश की है जिसमें प्राइवेट प्लेयर अट्रैक्टेड हो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज सेटअप करना एक बहुत हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होता है। अगर उसको हम आकर्षित कर पाएंगे तभी वो 2-3 साल का प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा और फिर उसका संचालन करेगा। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, इट्स अ सुपर स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग एंड यू नीड टू हैव डॉक्टर्स टू ट्रेन फर्दर MBBS स्टूडेंट्स। तो इस पॉलिसी के तहत वी हैव ऑलरेडी released 4 MOUs out of 16 and the remaining are also on their way। और भारत सरकार के थ्रू इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग भी हमें मिल रही है, तो उससे और ज़्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। एंड लास्टली जो नर्सिंग और पैरामेडिकल सेक्टर है उसमें भी क्वालिटी रिफॉर्म्स लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिससे कि जो नर्स और पैरामेडिकल सिस्टम में जा रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम में जा रहा है, वो केपेबल हो, वो कॉन्फिडेंट हो और पेशेंट को उससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो दैट येस व्हेन द डॉक्टर इज नॉट देयर एंड आई एम इन द हैंड्स ऑफ नर्सेज एंड पैरामेडिकल, आई एम इन सेफ हैंड्स। थैंक यू सो मच दुर्गा जी। और आपने एक वर्ड यूज़ किया हार्मनी, जो कि एक बहुत ही पोटेंट वर्ड है, हार्मोनाइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स टू मेक यूपी अ $1 trillion इकोनॉमी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज़। लेट मी मूव ऑन टू नेजरीन जी। एंड आई थिंक हमने यहाँ पर बहुत बात की है कि हम नए कॉलेजेस ला रहे हैं, हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, बट एक जो एस्पेक्ट है जो अभी थोड़ा अनटच रहा है इस डिस्कशन में, दैट इज़ अराउंड टीचर एंड इंस्ट्रक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग। सो आई वुड रियली लाइक यू टू थ्रो सम लाइट on how important that aspect is and what could be some good learnings therein. Honorable Minister,
Respected dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, a very good evening. First of all, let me take this opportunity to appreciate and let all of you know how happy I am to be sitting here among these personalities, and all the credit goes to Economic Times to invite somebody like me here. The reason I say this is because now it has been proven that this discussion is extended to people like us, cross-sector, cross-state. And I think that is what we need. And I also see a lot of equal gender representation here, which is again an admirable fact. I'm not a feminist, but I always ensure that there are many females on this stage. Okay, now I know we are short of time, so getting into the topic. Before even I answer your question, I want to appreciate the MOU signing that happened between the Skill Development Mission and Education Department for introducing vocational education into the school education system, mainstream education. It has been noted in NEP also that somehow in our country, vocational education is considered a little inferior. And we need to change that mindset. And so I think this is a great move which should be replicated to all the states in the country, where in the mainstream education, a universal vocational curriculum is there. Because we are also talking about skill development, holistic kind of a learning experience for all our students so that they remain in our country and then first of all, prevent dropouts and they don't go abroad, right? So now coming to your question regarding the trainings. We all know that we have a large population here. Sir was mentioning about the number of ITIs just in UP, and which also means that many number of teachers, that many number of students. So I would encourage public-private partnership here also. And we were talking about quality of what we are providing, right? So what quality are we talking about here? If it is infrastructure, I know a lot of efforts are already being taken here, but I will talk about quality of learning outcomes, quality of teachers who train the children, right? So for that quality, and we need to do it in a way that we don't have to spend a lot. So one thing that has worked for me, while I have been dealing with many education departments with different states, is bringing together the NGO sector to NGOs with the education department to implement programs at a large scale, project at a large scale. And I am proud to say that with my limited 2-3 years experience across 10 states, like it's not my individual effort, it's a lot of people's effort, but however, NGOs working with this sector, with education sector, actually has helped in scaling up a lot of programs, and that is by a trickle-down training model, where with a lot of experts coming from the NGO sector, sitting across the world, across the nation, works remotely towards curriculum development, which is giving a holistic learning experience, right? We need experiential curriculum now so that students get interested in their classes, and it is not just limited to the knowledge, bookish knowledge. So 5 or 6 NGOs who one can be an implementing partner, one can be a knowledge partner, and we bring a systemic change and use the resources that, existing resources that government has. And any partnership is like equal contribution, and I think clearly mentioning in the beginning itself as to what will be our contribution, what will be the government contribution, and working towards it. Good governance is also about transparency, accountability, and responsiveness. So at a mass level, if we need to make a change, I think we need to have a partnership committee where there are equal representation of all stakeholders, the government officials, the NGO representatives, teacher community people, student representatives, and we meet at a 6 months basis or so as a core committee and make interventions if required. So iNOVA Education is my company where we work on bringing together these kind of NGOs and other private people and make them meet the education department, sit together on what and where there is a requirement,
and we facilitate a collaborative work environment. This has worked really well, and I have multiple WhatsApp groups today with education secretaries and commissioners of different states, where within message we communicate, and on a regular basis we ensure that this is happening. So in one state 6,000 schools may this is happening. In another state 100 plus ITIs may there is 20-hour curriculum of mindset development happening. And sir mentioned about the importance of entrepreneurship curriculum. Let me also say a word or two about that and conclude. So I believe that along with giving skill education to students, it is also very important to create, if not entrepreneurs, at least an entrepreneurial mindset. What is entrepreneurial mindset about? It's just about believing in yourself. Like, what are natural qualities that come to entrepreneurs? Self-belief, self-awareness, grit. Like, no matter how you fail, it's okay. You get up and continue, right? So I think at school level itself, these kind of mindset trainings, even if it is for 10 hours or 20 hours in an entire academic year, if you can give, it makes a big change. And through that, you also give them an opportunity to go out in the real world and try out a business experiment or try out a new skill. One wonderful thing again about UP is the one product, one district, one product initiative by the Honorable CM. So that's such a beautiful concept. So the children have inspirational figures from their community. So relatable, right? In school also they are learning about entrepreneurship and skill, and they see in their district there is one person who is coming up with an innovative idea. So yeah, basically I would like to conclude by saying that make more collaboration with a lot of ecosystem partners. There are a lot of passionate philanthropists out there who are okay to come and help the system in making a change. Yeah, thank you. थैंक यू फ्रेंड्स, 1 मिनट और लूँगा आपका. देखिए यूपी में यूपी स्टार्टअप पॉलिसी बनी हुई है, और अब हम लोग यूपी इनोवेशन फंड वर्थ 4,000 करोड़ रुपीस ये बनाने जा रहे हैं. पॉलिसी डिसीजन हो चुका है. हमारे यहाँ जो स्टार्टअप कल्चर है, पूरा इकोसिस्टम है, उस सबको पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड ITI सब में हम लोग लेके आए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी. लेकिन ये जो इनोवेशन फंड है, इसमें प्राइमरीली 400 करोड़ रुपीस का एक कॉर्पस फंड होगा, और रिमेनिंग जो 3600 करोड़ रुपीस है वो आप जैसे ही इंडस्ट्री पार्टनर्स और आप जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनको इसमें शामिल करके हम रन करना चाहेंगे. ये भी एक टेक्नोलॉजी और स्किल के क्षेत्र में काम आने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव टूल होने जा रहा है. थैंक यू. Thank you so much, Subhash ji. Thank you, Nezrin ji. With that, let me hand over to Professor D.P. Singh ji for closing remarks. So over to you. Thank you. Thank you all the distinguished panelists. सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है, मैं कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो all types of education is in very competent hands and very safe hands. आज दीपक कुमार जी हमारे साथ नहीं हैं, विजय आनंद जी हैं, बोबडे साहब, सुभाष शर्मा जी, और अभी मेडिकल एजुकेशन का भी मैम से सुना और नजरीन से सुना. तो एक तो एज चेयर आई अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी पैनलिस्ट. Friends, it is said that, and everybody knows it, but for the sake of repetition, I want to say that education is an instrument for social transformation. Education contributes in sustainable national development. Education also contributes in character formation, man-making, and nation building. And investment in education is investment in future. तो इसको ध्यान में रखते हुए एक जो एनेबलिंग इन्वायरमेंट उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जिसकी की चर्चा बोबडे साहब ने भी की, पीपीपी मोड को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है. और सून our education departments will be organizing a conclave like this to interact with the private players, all the stakeholders, so that we can learn each other's aspirations, each other's expectations, और इस तरह से ये मुहिम आगे बढ़ेगी. मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छी शुरुआत हुई है, लक्ष्य बड़े हैं, लेकिन दिशा अच्छी है, दर्शन अच्छा है, और इसलिए हम अपनी जो मंजिल है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस तक पहुँचेंगे, और जो इंक्लूसिव और इक्विटेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है हमारा, उसको हम हासिल करने की कोशिश करेंगे. इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एंड विद व्हाटएवर वी हैव हर्ड सो फार,
there is little doubt that we will be able to unleash the power of youth from UP, not only in UP, but across the globe as well. Thank you all for your kind attention and participation in this. Thank you, distinguished guests, for your participation.